Good morning, students. It's time for holidays. So, we have given you some holiday homework. So, we are discussing here our English reader holiday homework. Bacha, I have given you homework in 4 parts. Firstly, we are talking about reading homework. You have to read chapter 1 and chapter 2 of your Honeydew book. Your chapter 1 name is The Best Christmas Present in the World. And your chapter 2 is Tsunami. And the chapter 1 of It So Happened book. And its name is How the Camel Got Its Hump. Now come to the writing part. Bacha, you have to write the summary of chapter 1, The Best Christmas Present in the World, and the chapter 2, Tsunami, on A4 sheets. Bacha, you have to use lined sheets like this. 2 line sheets you have to use for writing down the summary. Okay. Now come to the learning part. Bacha, these chapter 1 of Honeydew book and chapter 1 of It So Happened book, it's already come in your PT exam. So you have to learn chapter 2 of Honeydew book, Tsunami. Okay. Now come to the last part of your holiday homework, that is activity. And in activity you have to do 2 types of activity. One is audio, the second one is written. In audio you have to speak the conversation between the jinn and the camel. Okay, so you have to speak the dialogues which they used in the story How the Camel Got Its Hump. Okay, and you have to make the audio, and after holidays you have to submit it to me. Now come to the written part of your activity. You have to prepare a report on how tsunami born in the oceans with the help of pictures and one example of tsunami affected place. आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है ऑन A4 शीट्स कि सुनामी ओशंस में कैसे बॉर्न होती है, और यू हैव टू यूज द पिक्चर्स ऑल्सो, और आपको एक एग्जाम्पल भी देना है सुनामी अफेक्टेड प्लेस का. ओके बच्चा, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड द मैसेज टू योर क्लास इंचार्ज. ओके बच्चा, सो हैप्पी हॉलीडेज. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एवरीवन. Hello everyone, I am your English grammar teacher and I am going to explain holidays homework. Okay, so first of all I have given you unseen passages and these are given in module 1. Okay, so you have to complete it from page number 4 to 22. So first of all, read the passage, underline the difficult words, check the meaning of all that difficult words, and after that read the following exercises. Fill-ups are there, take the characters there, some small questions are there. Try to find out the answers from the given passage and do it. Okay. On second number I have given you to write applications. These applications are given on page number 107, 109, 110 and 112. Okay, so it means you have to write 4 applications and these are application to the school principal. Okay, and on every page some lines are given that are helping lines. They will help you that how you can frame this application. The format is also given in the book. If you feel that you have any doubt about format, you can check page number 106 or page number 105. The format is given on that. You have to write the name of your school, The Wisdom School. Don't copy the name that is given in the book. And date also, on which date you will do this work, you have to mention the same date. On third number, I have given you to write short stories. These stories are given
on page number 193, 195, 197, 199, 200 and 203. On every page, one box is given. In that box, some words are given. On other pages, some lines are given. On one or two pages, a small passage is given that will help you to create a story. When you will write story, kindly use past tense. Use second form, use was, were and ing form. I mean to say that you have to use simple past tense and past continuous tense. You have to write story in that tense only. Okay. So at some pages beginning is given, then middle line is given, end is also given. So do imagination, create a good story and write it, and try to write the moral also. What is the moral of that story which you have written? Okay. At the fourth point, I have given you do revision of all the grammar topics that are. Hello everyone, I hope you all are enjoying your holidays. I am Shelly, your maths teacher, and today I am going to explain your holidays homework. So yes, here is chapter 1. In the chapter 1 you have to do review exercise, which is at page number 32. You can do this work in your holidays homework notebook. Next one is chapter 2. In the chapter 2, you have to do again review exercise, which is at page number 50. And in the last chapter 3, do review exercise, but in the chapter 3 review exercise, you have to do sums up to 5th sum only, okay, which is at page number 74. And next you have to do MCQs of chapter 1, chapter 2 and chapter 3, which is already sent to you in the class group, WhatsApp class group, okay. And for the maths activity, students kindly check the link sent to you in the class group and complete your maths activity with the help of this video. Okay? So enjoy your holidays, go somewhere, have fun. Thank you. Have a nice day. Hello students. I hope all of you are doing fine and enjoying your summer vacations. Today I am here to discuss about the holidays homework assigned to you. So here it is. First one is read chapter 3 and 4 and do the book work. You have to do the book work of chapter 3 and 4 after reading. Next is page number 24, solve the crossword. आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे क्रॉसवर्ड है, आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 24 ग्रुप एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन सीड्स ग्रोन इन सॉइल. आपकी बुक में ही पेज नंबर 24 में एक ग्रुप एक्टिविटी है दैट आई एक्सप्लेन यू इन द क्लास ऑल्सो, that how you have to do it in the groups. Next is make a poster, save water, save life. You have to make a poster on the theme save water, save life. Next is collect information about deadly disease AIDS, write a small report about it. आपको information collect करनी है AIDS के बारे में और उसके बारे में एक रिपोर्ट राइट डाउन करनी है. नेक्स्ट इज सर्च अबाउट कल्पना चावला, APJ अब्दुल कलाम, एडवर्ड जेनर एंड CV रामन. राइट अबाउट देम इन 100 to 200 वर्ड्स. आपको इनके बारे में 4 साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, कल्पना चावला, APJ अब्दुल कलाम हैं, एडवर्ड जेनर हैं एंड CV रामन. इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और आपको उसके बारे में, इन चारों के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है 100 to 200 वर्ड्स ईच. नेक्स्ट इज गो ग्रीन बीट द हीट. एज यू ऑल नो 5th June is World Environment Day. So you have to grow a plant. We discussed in the class also that how you have to do this activity. Take care of that plant, water it twice daily, click the picture with grown up baby plant at the end of vacations and paste it in your activity book. आपको पिक्चर क्लिक करनी है फर्स्टली ग्रो करते हुए कि दैट यू हैव ग्रोन दिस प्लांट, एंड व्हेन द बेबी प्लांट विल ग्रो एट द एंड ऑफ वेकेशंस 2-3 दिन पहले आपको एक पिक्चर और क्लिक करनी है, दोनों का प्रिंट निकलवाना है और अपनी साइंस की एक्टिविटी बुक में इसको पेस्ट कर देना है. इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क, ओके, एंड एंजॉय योर वेकेशंस. Dear students, I hope you must be enjoying your summer vacation.
this is your holiday homework of social studies. First, activity 1, in which you have to prepare a flow chart of the resources. But you have to mention 3 type of resources. First, human and human made and human natural resources, and in which you have to also write down their example, and then you will write down the different categories of natural resources. In that flow chart you have to show different natural resources also. And in activity 2, you have to prepare a timeline of events given in the chapter 1 of history on A4 sheet. But you have to go through the chapter and find out the different events according to the date wise. Means in 1970 what happened, in 1978 what happened, in 1980 what happened. In the routine you have to find out the events. Next, you have to revise chapter 1 of history and chapter 1 of geography and chapter 1 of civics you have to revise. Okay, happy holidays beta. Hello students of class 8. Beta, this is your computer holidays homework. In learning part you have to do chapter 1 and 2 bookwork and question answer learn, okay, and do practice. In activity part do पेज नंबर 172 to 173 इन बुक में 2 पेजेस हैं, इनको आपने सॉल्व करना. इट्स जस्ट ए गेमिंग पार्ट, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. इन सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट ए डेटाबेस ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू कस्टमर आईडी. आपको याद होगा हमने क्या किया था, जब हमने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया था उसका फ़ोन नंबर प्रैक्टिकल में किया था कि फ़ोन नंबर, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का क्लास और कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था फील्ड एंड कॉलम्स का यूज़ करके. उसी तरह आपने एक कस्टमर की आईडी क्रिएट करनी है इसके ऊपर डेटाबेस में. एक कस्टमर का एक डेटाबेस रेडी करना जिसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो कस्टमर है उसकी आईडी होगी, वो कितनी परचेज करता है, कौन सी आइटम्स उसकी परचेज डिपार्टमेंट में है, तो ये सब चीज़ें आप जो है उसमें शो कर सकते हो. उसके बाद है पेज नंबर 171 पे एक पोस्टर मेकिंग के लिए मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है. उस पोस्टर में क्या है कि आपके पास साइबर एथिक्स के बारे में पेज नंबर 171 पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक पोस्टर दिया हुआ है, वो पोस्टर आपने चार्ट पे बनाना है. ओके बेटा, दिस इज योर हॉलीडेज होमवर्क फॉर क्लास 8. थैंक यू. Dear students, I hope you must be enjoying your holidays. This is your spoken English homework, holiday homework, in which one activity is given on page number 6 and 7. The activity which is given on page number 6, because in this activity 3 students can participate. One will act like a teacher and 2 will play the role of students. And at page number 7, 3 students can participate and 3 of them act like students only. And in activity 2, during holidays, if you go anywhere, if you visit anywhere beta, either it is historical place or hill station or a gurudwara or temple, so you have to write 20 lines of each. Wherever you go, you have to share your experience by writing 20 lines on A4 sheet. Okay, I hope you must have understood each and everything, and I thank you for listening. Good morning students. ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਮਾਲਾ ਪਾਠ 1, 2 ਅਤੇ 4 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਭਿਆਸ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ 5 ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪਾਠ 1, 2 ਅਤੇ 5। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੈਸਨ 1, 2 ਅਤੇ 5 ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਲੇਖ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਮੇਲਾ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਹਾਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ, ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 58 ਔਰ 59, ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 66 ਔਰ 67। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ।